Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are you all? Sir, fine, sir. How was your Deepavali? Good, good, good. So, is the softboard visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, today we will discuss event to sync reliable protocol. That is a transport layer protocol. So today is 19th. So, event to sync reliable protocol, or in short it is ESRT protocol. Okay. So the main motive of this protocol is we know that most of the transport protocols aim at mitigating congestion. Okay, mitigating the congestion, right? Congestion and reliability. Is that right, students? Yes, most sir. of the transport layer protocols focus on reliability and congestion. Okay, so reliability includes minimizing the loss of packets during communication between two endpoints, and congestion is that multiple nodes do not push packets aggressively and make the link congested. Okay, thus by leading to increased delay, loss of packets, and so on and so forth. So in a way, we say that most of the transport layer protocols are aimed at mitigating or enhancing the reliability and minimizing the congestion scenario, right? But this event to sync reliable protocol is a transport layer protocol whose main aim is to increase the reliability, and doesn't focus much on congestion. Okay, so the protocol is designed. It is designed to increase or ensure, I'll say, right? Rather, ensure will be a better word. Designed to ensure reliability. Okay, and having said that, to ensure reliability doesn't mean that it doesn't address congestion aspect, but congestion is a secondary design parameter. Okay, so the primary design parameter is the reliability, and moreover it is designed for sensor nodes, sensor to sync communication. Okay, so the reason for saying sensor to sync communication is that it is focused on event. Whenever there is an event occurs, or event of interest, or there are events of interest, then whatever information that should flow from sensor to sync must be, or must convey, or must meet the acceptable reliable requirements by the sync. What does it mean is that it is not let's say that it has some acceptable amount of reliability. Okay, are you understanding, students?
which means the sink will decide what amount of, or the application, what amount of reliability the application needs. Okay, so let me write here what amount of reliability the application needs. Okay, based on this, or I'll say that based on what amount of reliability the application needs. Okay, the parameter, the reliability parameter is decided. So the reliability parameter setting is decided by the sink. Right? What does it? I will try to simplify this. So this is quite simple as well. Let's suppose I'll say that if an event takes place, and for it to be, so this event will lead to some information transmission, right? Some information transmission. From where? From sensors. Okay, so whenever there is an event occurs, it will lead to some amount of information transmission from sensors towards sink, right? Towards sink. Now how does the sink know? How does the sink know? The question is that how does the sink is sure about the correctness of event, right? This is very important. Whenever an event takes place, the information are sent from different sensors towards the sink, right? So what we call as upstream link, upstream traffic. Okay, now how does the sink is sure about the event, the information received pertains to a correct event, right? So for that reason, one approach can be if there are 100 packets sent, okay, out of that 100 packets, if it receives 80 packets, if receives 80 packets, okay, if 80 packets are received, 100 packets sent, and if 80 packets are received, I'll say that 80% successful reception. So I will say that this event is correct, right? There is an event, right? On the other hand, if I receive 50% packets, received, so I'll say there is no event. So there was no event. And the reason of receiving these 50 packets can be anything. There can be it can be due to loss of 50 packets, can be due to loss of 50 packets, can be due to congestion, or there can be a link failure, anything. Or 50% nodes did not send at all, and these 50% transmissions are bogus transmissions, right? So there can be a number of reasons why the 50% of packets are lost. So what I mean to say through this example is that the application sets 80% as the threshold. Application sets 80% as the threshold to decide something about the event. Right? So is this clear, students? Yes, sir. Yes, please. So the percent threshold which we are talking about, we can change it according to our implementation. The application. Yes, that's why I said that it can vary from application to application. Okay, sir.
For some application it can be 90%, for some applications it will be 50%. So this is one parameter with respect to the number of packets received versus number of packets transmitted. Okay, see, sync will not know that how many packets were transmitted. Will sync know? Will the sync know beforehand that how many packets were transmitted? Answer is no. Answer is no. So sync the application will just put a put a condition that at least there should be 100 such information received, right? At least 100 such information should receive. Obviously 100% is 100 sensors or 100 number of attempts or whatever it is. So it sync just needs 100 count, right? It just needs 100 count. So whenever the count of information received exceeds this 100, then only it will decide whether there was an event or not, right? If it receives 99, it will not take any decision about the event occurrence or not. So 100 is the threshold here. 100 number of receptions the application running at the sync must receive. That is one thing. The other aspect can be, other angle we can think that by this time, so time can be another parameter, saying that अगर 10 मिनट में अगर मेरे पास ये information आता है तो ही मैं मानूंगा there was an event. अगर 10 मिनट तक नहीं आया तो मानूंगा कि कुछ भी हुआ नहीं. So time can be another parameter which can be set as a threshold at the sync by the application to decide whether there was an event or not. Clear? Yes, sir. Right. Students, any other question in this regard? Right. So since the protocol aims at or works around this requirement, so we say that is event to sync reliable transfer protocol. Okay, its more focus is on the reliability. What decides a reliable communication, right? So around that it is built. So it uses two event reliabilities. Okay, it defines two event reliabilities. One is, so it defines, so ESRT defines two event reliabilities. One is the observed reliability, observed, and the other one is the desired. One is the observed, the other one is desired. So observed क्या होता है? It is the actual. It is the actual. That is, as I said, that what is the name implies that what is observed, how many packets were received, or in what time it's whatever may be the parameter setting. Accordingly, what was observed in that state. Okay, and desired is the application setting, right? Desired is the application setting. So, or we can say that it is the target. So what can happen? The actual can be, so actual can be greater than target, or can be, or it can be less than target, or we can say that less than or equal to target, whatever you put. Fine. So when actual is greater than target, I'll say that yes, I'll take a decision that yes, the event has taken place. And if it is, if actual is equal to target, again event has taken place. But if actual is less than target, then event has not taken place. So these conditions are put just to decide whether an event has taken place. So I'll say that actual is equal to, or I can straight away write here. Okay,
So event occurred here, not occurred. Okay, that's the simple logic. So there is another aspect is that transport layer protocol cannot ignore the congestion, right? Although this protocol is optimized for reliability, but it cannot ignore the congestion aspect altogether. Then how can we control congestion? How can we control the congestion? So a parameter is the reporting frequency. Reporting frequency. And reporting frequency is the rate pertains to the sensor nodes. Okay, pertains to the sensor nodes or source nodes. Okay, that means how many packets are sent out per unit time by that node. Suppose what happens, how does it influence the quality of service? That if the reporting frequency rate by sensor nodes is very high, then what will happen? Obviously, the network will be congested with, gradually it will lead to a congested scenario, right or not? If the reporting frequency rate is very high, then it will lead to congestion scenario. More traffic will be generated, right? So, and if very less frequency rate is set, what will happen? Sometime it will deal with congestion, but what will happen? The number of packets required by the sink to decide whether there has been an event or not, that will be lost. That cannot be done suitably. If the reporting frequency rate is kept very small, then what will happen? Over a period of time, this actual number of packets received or any other parameter will be too small to decide whether there was an event or not. That's why an optimal reporting frequency rate is to be set. Right? So setting that will ensure that there will be no congestion or less chance of the congestion happening. Anything, students, up to this point? No, sir. Other students, any questions? No, sir. So I will summarize whatever we have discussed now. One is that ESRT is event to sync reliable protocol, and it is designed towards maintaining the reliability and not directly towards the congestion. However, congestion can be addressed by controlling the reporting frequency rate by the sensor nodes, right? And at the application side, on the application side, every application can have its own threshold setting, and we'll have two reliability aspects. One is observed reliability, the other one is desired reliability. And comparing these two values, the application can decide whether an event has taken place or not. Correct? Yes, sir. Okay. Now we'll go into a little detail about this protocol. So let's take let's define that how to measure the event reliability. Okay. So the event reliability eta is equal to R over R. Okay. So what is R? R is your the observed one. Okay. So you can say that observed over
the observed over the targeted. Okay, observed over the target. Fine. So what values you see with respect to event? You see these conditions. If actual is greater than or equal to target, then event has occurred, right? Which means that eta can take what values? What values? What will be the range of eta? Eta can be very small to what is it? Eta can be very small to 1. 1. More than 1. There can be more than 1. See, there can be observed. Observed can be more. The actual can be more than the targeted. Can it happen or not? Observed can be more than target. That's what we said here. Yes, sir. Right? So it can be more than 1. Am I writing the correct equation? सर 1 से बड़ा हो सकता है. So eta क्या होगा यहाँ पे? इधर क्या होगा? लेफ्ट साइड क्या होगा? Eta varies between सर 0 के approximately कोई value. yes, let us say 0.1. 0.1 मान के चलो एक नॉन जीरो वैल्यू, स्मॉल नॉन जीरो वैल्यू 0.1 से लेकर इट कैन बी 2, 3 डिपेंड्स. ठीक है. सो क्या ऐसे लिख सकते हैं? No sir, then eta will be less. In every condition eta should be less than 1. तो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? बाकी लोग बोलो इधर. Sir, we can put it like if this condition is true, then it is not. How will you write this equation? How will you write this inequality equation? कैसे लिखोगे इनइक्वालिटी इक्वेशन? ईटा का वैल्यू इस रेंज में होना चाहिए. मान लो कि 1.1 से 2 के बीच में अगर होना चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? ईटा अगर 0.1 से 2 के बीच में होना चाहिए तो कैसे लिखूंगा? सो ईटा शुड बी लेस देन 2. पहले तो ये हो गया, अपर कंडीशन रख दिया. ये क्या है? अपर लिमिट है. ईटा का वैल्यू 0.1 से 2 के बीच में होना चाहिए. लेट्स सपोज सो ईटा शुड बी लेस देन 2. yes, so I can make it equal to 2 as well. That depends. ठीक है, बट यहाँ पे मैंने 0 to 2 होगा तो equal to 2 भी हो सकता है. So this is the condition. This is an example of writing the range. क्या स्टूडेंट्स इतना नहीं कर पा रहे हो? दुख की बात है. ठीक है. So we don't know what will be the upper limit here, but we just took an example to say that how eta can vary from a small non-zero value to a large value. That was the thing. तो ये अगर observed अगर ज्यादा है, if r is more, what does it mean? ये जो reporting frequency है ज्यादा है, right? So ये जो frequency is more, है कि नहीं? स्टूडेंट्स कुछ बोलो भाई. Yes sir. Yes sir, yes. हाँ. If I cannot see you all. ठीक है. I am dependent on your voice. ठीक है. So if r is more, the numerator is more. Obviously the f is more for a given r. अगर
हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ ईटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है, आर ज्यादा है, आर ज्यादा है मतलब एफ ज्यादा है, ठीक है। अगर ईटा स्मॉल है, ईटा स्मॉल है मतलब क्या, आर, आर इज मोर, आर इज मोर। अगर आर इज मोर मतलब ये एफ इज स्मॉल, एफ इज स्मॉल मतलब आर इज स्मॉल। तो ये सारे आपस में रिलेटेड है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ईटा। ऑब्वियसली द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ईटा इज, हमने क्या बोला, आर इज इक्वल टू आर होना चाहिए, विच मीन्स ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ईटा इज 1, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो जब जब ट्रैफिक एक मिनट रुको, हाँ दायरा, अच्छा अच्छा सुनो, थोड़ा मैं अभी ऑफिस में हूँ, थोड़ा अभी आधा घंटे में मैं फ्री होता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, और मैडम का फोन नहीं लगेगा, मैडम अभी हैदराबाद निकली हुई हो, तो पहुंचेगी करीब 11:30-12 बजे, तभी वो फोन कर पाएंगी, ठीक है। हाँ तो मैं थोड़ा आधा घंटे में फोन लगाता हूँ। यस, तो हम क्या बोल रहे थे, ईटा इज इक्वल टू 1। तो ऑप्टिमल वैल्यू जो है ईटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमें बताना है कि जो कंजेशन है या ट्रैफिक कहो, हम अगर ट्रैफिक प्लॉट करेंगे, ट्रैफिक प्लॉट करेंगे तो कैसे दिखेगा बताओ। ट्रैफिक प्लॉट अगर करते हैं तो कैसे दिखेगा। तो मान लो कि ये अगर हम लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम लेते हैं रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, और इधर ये हो गया तुम्हारा रिलायबिलिटी। तो हम नॉर्मलाइज रिलायबिलिटी कर दिए, ठीक है, नॉर्मलाइज रिलायबिलिटी कर दिए। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा ईटा इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू 1 आया। अब हम प्लॉट करते हैं। ये शुरू में जब रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी ये 0 है, ठीक, तो जैसे रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया, जैसे देखो ग्राफ देखो ध्यान से बच्चों, सॉरी क्या हो रहा है, तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ता गया मतलब कि ट्रैफिक तुम्हारा बढ़ता गया, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ता गया, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आके तुम्हारा क्या हुआ कि ऑब्जर्व एंड टारगेट दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे जब इक्वल हो गया मतलब इफिशियंसी 1 हो, सॉरी एफिशिएंसी बोल रहा हूं, रिलायबिलिटी 1 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट समझ रहे हो। यस सर। हाँ, यस सर। अब क्या हो कि और भी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी जारी है, बढ़ रहा है रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा नोड्स तुम्हारा ये कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो रिलायबिलिटी बढ़ता जाएगा। नो सर, इट विल डिक्रीज। क्यों नहीं, क्यों नहीं, सर बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। तुम्हारा एफ बढ़ रहा है, एफ जब बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है कि नहीं। एफ बढ़ रहा है मतलब आर भी बढ़ रहा है कि नहीं, जो ऑब्जर्व है, Yes. रिसीव कर रहा है। तो आर जब बढ़ेगा तो ईटा क्या है, आर ओवर आर। जब आर बढ़ रहा है तो ये आर तो फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, ईटा बढ़ता गया, ईटा बढ़ रहा है, ठीक है। अब समझ में आया ईटा क्यों बढ़ रहा है, यस सर, यस सर। ईटा बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट अदर्स। Yes, sir. हाँ, ईटा बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, जब ये आर और बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू कंजेशन। जैसे आर बढ़ता जाएगा तो क्या हो गया, कंजेशन की तरफ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा। जब बहुत ट्रैफिक होने लगेगा तब क्या होगा, ये तुम्हारा
ये आर कम होता जाएगा, है कि नहीं, धीरे धीरे यस सर। ये आर कम होता है। जब आर कम होता जाएगा क्या होगा, ईटा भी कम होता घटता जाएगा। अब यहां से घटना चालू हुआ, यहां से घटना चालू हुआ, ठीक है। घटते घटते एक पॉइंट पे आएगा जब फिर से ये आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, माने कि ईटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद क्या होगा बताओ, प्लॉट कैसे जाएगा? सर नीचे जाके जब जाएगा तो उसके बाद फिर वापस से कंजेशन कम हो जाएगा। यस, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह जाएगा ये, ठीक है। जी सर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको, इस ग्राफ को हम एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए हम लोग इस ग्राफ से ये देखें कि हाउ द नेटवर्क इज ऑपरेटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द वेरिएशन इन रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम थोड़ा और डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने से क्या पता चलेगा कि ये जो इधर वाला लाइन जो है, इधर वाला जो लाइन है, ये रीजन जो है, ये हमारा वांटेड रीजन है। वांटेड रीजन मतलब कि यहाँ पे कोई कंजेशन है नहीं इस रीजन पे, ठीक है। इस रीजन पे कोई कंजेशन नहीं है। और क्या है, और क्या है? सर उसमें कंजेशन है बट उसमें रिलायबिलिटी कम है उस रीजन यस में। यस, ये इसमें रिलायबिलिटी कम है क्योंकि ईटा 1 से कम है। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे कि लो रिलायबिलिटी एंड नो कंजेशन, एनसी, ठीक है। कह सकते हैं बच्चों, यस सर। कोई कंजेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंजेशन हमें कब पता चला, जहां पे हमें पैकेट ड्रॉप होना चालू हुआ है, जो भी ये आप पढ़े होंगे ये कि जो एक जो क्या था, कौन सा था, एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, टाहो रनो, इस तरह बढ़ता था, फिर यहाँ पे कंजेशन विंडो हाफ होता था कि नहीं? यस यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्यों हाफ होता था वो, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन डिटेक्ट किया, इसलिए उसने कंजेशन विंडो को आधा किया। हमारा दूसरा फिक्स्ड नेटवर्क में हमने ये पढ़ा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ भी कंजेशन डिटेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इस रीजन को हम क्या कहेंगे अभी, हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, इंक्रीजिंग कंजेशन, अगेन नो कंजेशन। कंजेशन तो बेटा यहाँ ना, इसके बाद इस पॉइंट पे, इस चोटी पे जाकर कंजेशन हुआ, पता चला। लेकिन हमें सिस्टम को, ठीक है, हम देखने के लिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कंजेशन हुआ, लेकिन सिस्टम को कोई कंजेशन पता नहीं चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी रेट इज इंक्रीजिंग, ओके। समझ पाए? तो ये जो रीजन हुआ हमारा कि हाई रिलायबिलिटी, क्योंकि रिलायबिलिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड नो कंजेशन बिकॉज द reliability has not yet started decreasing, ठीक है। The reliability has not yet started decreasing, so we say it is high reliability and no congestion, ठीक है। अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम देखते हैं, ये वाला पॉइंट को अगर हम देखेंगे, ये क्या होगा, सीधी सी बात है, रिलायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब दिस इज अ कंजेशन सिनेरियो। रिलायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। सो सीधी सी बात है, ये कंजेशन के चलते रिलायबिलिटी डिक्रीज हुआ है। सो ये कंजेशन रिलेटेड है। फिर भी ये हाई रिलायबिलिटी रीजन में है कि नहीं, ईटा से ज्यादा है, ईटा 1 से ज्यादा है। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो? यस सर। हाई रिलायबिलिटी रीजन में है क्योंकि ये अभी ईटा इज इक्वल टू 1 तक टच नहीं किया है, ईटा इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रहा है। तो जब तक उससे नीचे ना जाए तब तक हम उसको हाई रिलायबिलिटी रीजन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन कंजेशन है क्योंकि रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसीलिए तो रिलायबिलिटी घट रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा, ये जो रीजन है, ये क्या होगा,
obviously congestion and low reliability. समझ में आ गई? ग्राफ में there are four regions in the graph. One is low reliability and no congestion initially till the reliability reaches 1, and after that high reliability, no congestion, and then congestion जब होता है reliability घटने लगता है, it goes to congestion and high reliability mode, and further जब eta is equal to 1 से कम हो जाता है तब congestion and low reliability mode पे आ जाता है. ठीक है, सही हुआ क्वेश्चन? सही समझ में आया? Yes, sir. Right. Now the question is that what should be what should we understand from here? ठीक है, ये 4 रीजन में तो हो रहा है. सो क्या ये जो रीजन है क्या ये जरूरी है? So you mean the fourth one in which the eta is decreasing? Yes, less than 1. That point is that the point, a good point to decide what should be the reporting frequency rate? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी रेट मिला. एक फ्रीक्वेंसी रेट हमें इस पॉइंट को लेकर मिला जाते समय, और इस फैक्टर पर जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हो ना, बैंड पास फिल्टर या कुछ पढ़े होंगे, पता नहीं आप लोग याद होगा कि नहीं. एनीवे बैंड पास फिल्टर पढ़े. हाँ ठीक है, छोड़ो, याद मैं उसी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में 2 पॉइंट्स पे 2 रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी पे हमें eta इज इक्वल टू 1 मिल रहा है कि नहीं? तो एक हम इसको कहेंगे F1 और इसको हम F2 कहेंगे, लेट सपोज. तो F1 और F2, F1 के रिलेटेड एक रेट है कि नहीं? एक क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे हमारा eta इज इक्वल टू 1 आ रहा है और एक दूसरा फ्रीक्वेंसी पे eta इज इक्वल टू 1 आ रहा है. ये है कि नहीं? यस सर. तो हम किसको लें? सर F2 को प्रेफर करेंगे सर. नहीं, अगर F2 को लेंगे तो क्या होगा, सिस्टम में डैमेज चालू हो जाएगा. ये बट सर उस टाइम पे हम लोग का कंजेशन कंट्रोल में आ गया है ना सर, उसके बाद वापस से. बट यहाँ पे तो तुम्हारा कंजेशन हो ही गया है, and congestion is always unwanted. There cannot be good congestion, bad congestion. Congestion is always bad. ठीक है, तो यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, तो हमें देखना है हमेशा, चाहे किसी भी तरह का नेटवर्क हो, कंजेशन ट्रैफिक शुड नॉट लीड टू कंजेशन सिनेरियो. अब कंजेशन होता है तो उसको मिटिगेट करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, प्रिवेंटिव मेजर. बट प्रोएक्टिवली हमें देखना है कि द नेटवर्क शुड नॉट लीड टू ए कंजेशन सिनेरियो. दिस इज अ थंब रूल. ठीक है, तो अगर वो चीज है, then of course F2 value will not contribute much because the damage has already taken place. So हमें क्या करना पड़ेगा, F1 को हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो जैसे F1 जो हमारा जो ऑप्टिमल रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी रेट जो हम कह रहे हैं, that optimal reporting frequency rate should be this F1 and not F2. ठीक है बच्चों? So the rate which we have at F1, if we continue with that rate only, हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा कभी कंजेशन होगा ही नहीं. Yes, that's right. So the question before discussing this graph was that अगर हम eta is equal to small r over capital R करते हैं, ठीक है, observed over target करते हैं, तो हमें f का वैल्यू, क्योंकि f कहीं ना कहीं इसके बीच में जुड़ा हुआ है और f को हमें कंट्रोल करना है, तभी जाके वो किस वैल्यू ऑफ f पे eta is equal to 1 आएगा. एट द सेम टाइम कंजेशन नहीं होगा. दैट वाज द प्रॉब्लम. ठीक है,
तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने ये ग्राफ को स्टडी किया, और स्टडी करके हमने ये देखा कि ऐसे दो फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं जहां पे कि ईटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब सवाल आता है कि हम कौन सा फ्रीक्वेंसी को चूज करें फॉर ईटा इज इक्वल टू 1। दैट इज वेयर वी केम टू द कंक्लूजन दैट choosing f1 is better over f2 because f1 gives us better control over mitigating or avoiding the, not mitigating, or avoiding the congestion scenario. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So दूसरा एक और इसमें ये मोटा मोटी पे यही चीज प्रोटोकॉल करता है। तो इन्होंने एक चीज और भी किया है कि इन्होंने एब्सोल्युटली ये, सॉरी आई हैव चोजन अ रॉन्ग कलर, ओके। सो एब्सोल्युटली ये वैल्यू चूज ना करके उन्होंने क्या किया कि टॉलरेंस लिया है, ठीक है, एक टॉलरेंस लिया है। What happened? एक टॉलरेंस लिया है, ठीक है, यह हो गया प्लस ई माइनस ई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखें कि एफ प्लस एप्सिलॉन एफ माइनस एप्सिलॉन। सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ ऑप्टिमल, ठीक है। एक एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेके एक रीजन लिया जिसके अंदर की रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करेंगे, कि जो भी एक रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी दिया गया है उससे ये टॉलरेंस रेंज में वो ऑपरेट करे। Any questions, students? No, sir. Yes. It is very small value. और ईटा को अगर तुम बहुत ज्यादा लोगे तो फिर तो ये इसका बराबर आ जाएगा, और ईटा का वैल्यू बहुत छोटा लोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो रेंज विल बी टू लार्ज, अगेन दो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सर एक चीज में डाउट है सर, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे कोई नेटवर्क में तो ईटा इज इक्वल टू 1 जहाँ पे आ रहा है, बट सिस्टम तो उसको पहचान नहीं पा रहा है ना कि सर यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू 1 है और इससे ऊपर नहीं जाना है। सिस्टम नहीं पहचाना, हम सिस्टम को इस तरह पहचानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि सेंसर नोड पे हम ये रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये कि सेंसर नोड्स को किस फ्रीक्वेंसी से रिपोर्ट करना है कोई भी मेजरमेंट वैल्यू। मुझे 10 मिनट में 10 बार करना है या 10 मिनट में 5 बार करना है, ये कौन बताएगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो जब प्रोग्राम लिखेगा, सेंसर नोड पे डिप्लॉय करेगा, वो लिखेगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये 10 मिनट में 5 बार रिपोर्ट करेगा या 10 बार रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को वो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए कुछ एनालिसिस करना होता है कि व्हाट विल बी द ऑप्टिमल setting of the reporting frequency at a given sensor node, so that for that application it does not lead to a reliability less than 1। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि एक सेंसर नोड पे मल्टीपल एप्लीकेशंस चल सकता है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। अब कोई डाउट है इसमें? ओके, सो ये हो गया कि किस तरह रिलायबिलिटी को ESRT एड्रेस करता है। दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डिटेक्शन, कंजेशन को कैसे डिटेक्ट करता है। ठीक है, कंजेशन को कैसे डिटेक्ट करता है, जो हमने यहाँ पे देखा, ये पीक पे जाके फिर ड्रॉप होने लगता है।
ठीक है, ड्रॉप होना है। तो कंजेशन कैसे डिटेक्ट करता है कि जो कंजेशन होता क्यों है, क्योंकि ये जो एफ है रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है कि नहीं, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, उसके चलते कंजेशन होता है। तो कंजेशन नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी इज द ओनली कंट्रोलेबल पैरामीटर, एफ इज द कंट्रोलेबल पैरामीटर, ठीक है। तो एफ अगर बढ़ जाता है तो हमने देखा कि कंजेशन की तरफ जाता है। तो कंजेशन कैसे, इसको हम रेगुलेट करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है किसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे। सो एवरी सेंसर नोड हैज ए लोकल बफर, ओके राइट, एवरी सेंसर नोड हैज देयर लोकल बफर्स, ठीक है। तो ये जो लोकल बफर जैसे ही उनका फुल हो जाता है, जब तक फुल नहीं होता है तब तक वो ये करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे, ट्रांसमिट करते रहेंगे। जैसे ही फुल हो गया उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मैंने लोकल बफर का सेटिंग कर दिया कि सम किलोबाइट और समथिंग जो भी है, ठीक है, कुछ सेटिंग कर दिया। वो जब भर जाएगा तब फिर फर्दर एफ नहीं बढ़ेगा, गेट क्लोज हो गया, ठीक है। सो checking a node's local buffer size is a typical way to find out the congestion level. So TCP भी तुम्हारा उसी लेवल पे है, उसी बेसिस पे है कि नहीं, कंजेशन विंडो। स्टूडेंट्स, TCP में कैसे कंजेशन डिटेक्ट किया जाता है, पैकेट लॉस होता है तभी कंजेशन विंडो डिटेक्ट किया जाता है कि नहीं। यस सर। और पैकेट लॉस कैसे पता चलता है, पैकेट लॉस तब पता चलता है जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है विद टाइम आउट पीरियड। और जब तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तब तक सेंडर क्या करता है, वो पैकेट को अपने बफर में मेंटेन करके रखता है। जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तभी जाके वो सेंडर एंड पे जो विंडो है वहां से वो डिलीट करता है वो पैकेट, है कि नहीं। तो समय पे अगर ऐसे बहुत सारे अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स अगर रहेंगे तो क्या होगा, बफर फुल हो जाएगा, है कि नहीं। बफर जब फुल हो जाएगा मतलब कि आगे हमें ट्रांसमिट करना नहीं है, ठीक है। सो द सिमिलर मैकेनिज्म इज अडॉप्टेड हियर, एक लोकल बफर मेंटेन किया गया है हर नोड पे, और जब तक फुल नहीं हुआ है तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। और जब फुल हो गया मतलब कि देयर आर मेनी नंबर ऑफ unacknowledged packets, so now it should stop sending anymore, ठीक। और कोई क्वेश्चन, Sir, I have a question. yes please। Sir, this sync node, can it set different threshold frequencies for all the sensor nodes? I did not understand your question properly. Sir, can a sync node set different thresholds for different sensor nodes, or it has to set one? See, it depends on application. अगर एक सेंसर नोड पे एक भी एप्लीकेशन हो सकता है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन भी हो सकता है। अगर एक ही एप्लीकेशन होगा तो एक ही थ्रेशोल्ड सेट होगा, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी रेट सेट होगा। अगर दो चार एप्लीकेशंस है तो उन सब एप्लीकेशन का पहले एप्लीकेशन से अलग रिपोर्टिंग रेट होगा तो अलग सेट होगा। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। ये सारा आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट। And sir, can it change its threshold in the middle of the data transmission? यस, उस केस में एडेप्टिव ये कर सकते हैं कि एप्लीकेशन का रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। So sir, if in the middle of the data transmission the sync node doesn't want to receive any more information, it can change its threshold. Yes, it can change. Okay.
1 minute. So I think we are done, huh? Hello. Hello. नहीं पहुंच गए लोगी हाँ बिफोर टाइम ओके ओके हो ठीक है हाँ हाँ ओके नहीं पढ़े हाँ 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 राइट गुड हाँ हाँ मैं टिके समय कॉल बैक करछि टिके समय कॉल बैक करछि राइट हाँ हाँ ओके yes students, so we are done with ESRT protocol. So I will expect that you read E square RT, that is enhanced ESRT protocol on your own. ठीक है तो मैं आज जितना हुआ मैं भेज देता हूँ और E square RT का भी भेज देता हूँ ये ठीक है Okay, sir. right thank you right Thank you, sir.